नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने You all know the word grammar, and you all know the word Vyakarana also, and you all know that Vyakarana is grammar. Right? Okay. Let me tell you that the word grammar in English, it comes from the Greek root graphein. Which means to write. It is from this root only we are getting the words like graph, ethnography, photography, graphic, okay, everything. To write, the word means to write. And based on this root only, in Greek, their grammar was called techne grammatike. Yesterday you heard that, Professor, so you know that they don't have retroflexes, so they pronounce it as techne, grammatike. So that word, techne and grammatike, it means technique of writing. Because this word grammatike is coming from graphein, to write, it means of writing. Technique of writing. So technique grammatike means technique of writing. That means how to write. That's what the word technique grammatike is telling you. So the word grammar, which came into English also, originally meant only that. It just meant technique of writing, how to write. Whereas Vyakarana is not that. Vyakarana doesn't tell you how to write. First of all, yesterday also we discussed, and we have been discussing for the last 1 week, that in Sanskrit we do not have writing consciousness. We always have oral consciousness. We are not literate conscious people. We always think about language to be something spoken. Right? Bhasha, bhashayati, right? Bhashanam karoti, bhasha. It is only spoken. We talk about it in a spoken way. So, to think about language as something written is the limitation of these people. That is a weakness of those people, because they have been thinking about how to write only, but they did not think about the primary importance for
the spoken aspect of language. Language is always spoken. Any language. There are many languages in the world which do not have a script at all, but still they are languages. And this basic fact about language, that it is always something that is spoken, not written, has always been there with Sanskrit speaking people, Indians. We remembered that no, writing to chalega. Spoken form is the primary one. But here they were talking about technique of writing only. And technique of writing, that's what it is telling. What does that book tell you? How to write, which sentences are correct, which sentences are wrong, how to start the paragraph, how to end the paragraph, all that. Vyakarana is not that. Vyakarana book doesn't tell you any of these things. What is Vyakarana book doing? Vyakriyante vivichya pradarshante anena shabdaha iti Vyakarana. We know that it is analyzing, it is splitting words into prakriti and pratyaya, and it is showing the analysis. This advancement that Sanskrita Vyakarana has, that is not there in that. There is no such advancement there. It is small book, how to write, how not to write. Small things like correct sentence, wrong sentence. Only that is there in that book. It is an instructional book. It just tells you what to write, what not to write. For books like that, what to write, what not to write, in Sanskrit books we have Kavishiksha Granthas. Do you know that word? Kavishiksha Granthas. In Sanskrit we use the word Kavishiksha Grantha. Do you know that we use a word called Lakshana Grantha? Lakshana Grantha also. Lakshana Grantha. Alankara Shastra Grantha, for example. All the Alankara Shastra Grantha, actually sometimes they are also called as Alankaraha. Alankaraha, Lakshanika Rupena, Alankaraha, Alankara Grandhaiva Bhavati. Alankara Grandhameva, Alankaraha iti Katyate. Right? Alankara Granthas are also called as Lakshana Granthas. There is the other word, Lakshana Grantha. They are also called as Lakshana Granthas. And even grammar, Ashtadhyayi, is also a Lakshana Grantha. What does it do? It gives you Lakshana, rule, that is, Lakshana is the rule, sutra. And this sutra has been arrived at from on the day when we were discussing inductive. We were saying from prayoga we come to the rule. From example to the rule we come. This prayoga is called lakshya. The usages, actual words that we use, actual expressions, actual sentences that we use in the language are called lakshya. Do you know this word? Do you know this word? So you know lakshya but you do not know lakshana. How is it possible? If you know lakshya, you should also know the word lakshana, because we always use lakshya and lakshana as a pair. We say lakshya lakshana samanvaya. Lakshya lakshana samanvaya. Whether it is alankara or chandas or riti or guna or paka, any dhvani or whatever, you have a lakshya. From the lakshya you mention the lakshana and you do the samanvaya between lakshya and lakshana. That is lakshya lakshana samanvaya. Okay, so because lakshana granthas give you all the lakshana or all the lakshanas, we can use it in singular or plural.
they are called Lakshana Granthas. And these Lakshana Granthas, what is the purpose of the Lakshana Grantha? What is the use of a Lakshana Grantha? Use of a Lakshana Grantha is to train a Kavi. What is the use? To train a Kavi. To train a Kavi is called Kavi Shiksha. That is why they call them Kavi Shiksha Granthas. That is why if you go to these Alankara books, Lakshana books, inside, why should they discuss Kavya Hetus? Why should they discuss Kavya Prayojana? Why should they discuss what is required for you? For example, Kavya Hetu, you know Kavya Hetus, right? What are Kavya Hetus? There are 3 Kavya Hetus. Shaktir Nipunata. Why should they tell all these things to the learner? He is going to become a poet. So he should know what he should acquire. Pratibha, Vyutpattihi, Abhyasaha. All these I should have. I should have Pratibha, I should have Vyutpatti, I should have very good Abhyasa also. Then only I can become a very good poet. Do you know these 3? Pratibha, Vyutpatti, Abhyasaha? Tadeva. Tadeva. Shaktir Nipunata, Pratibha, Vyutpatti, Abhyasa, one and the same. But these 3 words, Pratibha, Vyutpatti and Abhyasa, are very good to remember. We must all have these 3, Pratibha, Vyutpatti and Abhyasa. Do you all have? Do you all have Pratibha, Vyutpatti and Abhyasa? No? Some people are saying no. Some people are saying yes. Okay, first of all you tell me, do you have Pratibha? You have Pratibha, right? And what is Vyutpatti? Pandityam. What we call Pandityam is also called as Vyutpattihi. So how do we get Vyutpatti? By reading lots of books. By reading books we get Vyutpattihi, right? And that Vyutpattihi also comes from teachers, by hearing from teachers. Loka Shastra Kavyat Yavekshanat. You know this? Loka Avekshana, Shastra Avekshana, Kavya Avekshana. You have to do all this. Loka Avekshana, Shastra Avekshana, Kavya Avekshana. That all this gives you. For example, if you are a student of mathematics, there is no Kavya there. You have to read mathematics books. If you are a student of physics, you have to read physics books. Whatever it is, you have to read. Loka, you have to observe the loka also. But even if it is physics or sociology or anthropology, you have to study loka only. And Shastra, the subject of anthropology, is the subject of physics. And Kavya, Loka, Shastra, Kavya. So these 3 words we can take to any subject. We can tell any student of any art that you need all the 3, Loka, Shastra, Kavya, Vyavekshana. That gives you Vyutpatti. You get Vyutpatti out of that. Then third thing is Abhyasa. You have to do Abhyasa. What does it mean? You have to repeatedly do what you are doing. For example, before examination, नेट एग्जाम से पहले 5 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, आंसर करना. पुराने क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं ना नेट एग्जाम के, सॉल्व करना बैठ के, वह अभ्यास है. तब नेट में अच्छे अंक मिल सकते हैं ना, मिल सकते ना. डायरेक्टली जाकर बैठ के हाल में तो नहीं मिलता है ना. इसलिए ये नेट का बहुत प्यारा नेट बोले तो अच्छा, तो हाँ नेट में अंक मिलते हैं ना. इसीलिए नेट बोले तो बहुत खुश होता है वो. हाँ जरा पिल गया है नहीं ना. हाँ तो अभ्यास तो किए ना आप, इसीलिए तो मिला है. अभ्यास करने से ही मिला है. इन लोगों को बोलो अभ्यास करो, अभ्यास करो. नेट मिलना है, जेआरएफ मिलना है तो अभ्यास करो. अभ्यास नहीं करने से नहीं मिलता है. अभ्यास हर किसी चीज के लिए करना पड़ता है ना. कोई भी काम हो अभ्यास करना पड़ता है.
ये तीनों चीज़ों को आप रखना है, कवि बनना है तो काव्य लिखते जाना, श्लोक लिखते जाना, उस अभ्यास से कवि बनोगे. दिस इज द पॉइंट. कवि प्रतिभा, व्युत्पत्ति एंड अभ्यास. व्हाई आर दे टेलिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज दे आर कवि शिक्षा ग्रंथास. That is their poet training books. These books were also like that. This Techne Grammaticae was also similar to our Kavishiksha Granthas. So, now we realize that we unnecessarily got confused and we thought that our Vyakarana and their grammar is one and the same. No. Their grammar and our Vyakarana are not one and the same. Their grammar, their Techne Grammaticae is similar to our Kavishiksha Granthas. Okay? And even today, if you look at a grammar book, English grammar book, what does it do? It does not do Vyakarana. V-A-Kri is not there in that. Do you see any English grammar book in which Vyakarana is done? Vivichya Pradarshana is done? Vivechanam nasti, Pradarshanam api nasti. Prakriti pratyaya vibhagameva nasti. Tasmin. Right? They do not do any analysis of word or prefix or suffix and how they match and how words are formed. Nothing of that sort. Only which sentence is correct, which sentence is wrong. How to write, how not to write. What are tenses, what are this, what are that. That's all. That is their grammar book. But whereas our Vyakarana is much more advanced. You are able to realize this? Ours is an analysis of language. Ashtadhyayi was doing analysis of language, which is a more advanced activity. Why is it more advanced? Just let us see. If you, for example, want to do NLP, you heard NLP? Natural Language Processing, and they taught some amount of natural language processing also. What is natural language processing? What do? We teach the computer how to process the language. Okay. For this, you have to feed some amount of analysis into the computer. That cannot be done using an English grammar book. English grammar book में क्या रहता है? कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, ये सेंटेंसेस दिए जाते हैं. मगर अष्टाध्यायी में जिस तरह का एनालिसिस हो रहा है, सेंटेंसेस का, वर्ड्स का स्प्लिटिंग हो रहा है, यह एनएलपी के लिए यूज हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज हो सकता है. इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, अष्टाध्यायी संस्कृत कंप्यूटर्स को क्लोज है. क्यों बोलते हैं? इंग्लिश क्लोज नहीं है. English grammar books are not useful for feeding English into computers. They do not have that analysis that should be there in analyzing a language. You understand? So that is where they come from. The Westerners, when they came to India, they came for business purposes in the beginning, but gradually their scholars also started coming here. Some of the officers themselves, some of the business officers, that East India Company officials themselves were also scholars side by side. They came and studied our Sanskrit and saw similarities between Sanskrit and their own European languages and started studying and started, I told you, philology, a subject they started. And they wanted to do comparative study of Sanskrit and their languages. How to do that? For this, method also was got from Sanskrit only. When they studied Sanskrit grammar, Ashtadhyayi and all these things, then they learned a lot of methods of analysis. How to do analysis also they learned from Sanskrit only. That is why later, when all that analysis called philology and all that turned into what is linguistics, the subject linguistics, they borrowed
a lot of material from Sanskrit grammar books. Almost the first book of linguistics, general linguistics that we see is that of Leonard Bloomfield. Okay, a book is called Language. A very, very famous name in linguistics, almost one of the earliest of the modern linguists, authors of the book of general linguistics, we call it. He was also a great scholar of Sanskrit. He was also a great scholar of Vedas. Actually, he compiled Vedic concordance. Bloomfield compiled concordance. You know the word concordance? Concordance is an index of usages, word usages. Which word has been used where in a book? If you compile a list of that, that is called concordance. आप भी तैयार कर सकते हैं, आपके रिसर्च के रूप में आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं कंकॉर्डेंस बनाने का. Concordance of Kalidasa, you can prepare. All the word usages done by Kalidasa in his various books, Raghuvamsha, Kumara Sambhava, Vikramarvashiya, Vijnana Shakuntala, everything. Put all the Kalidasa's books at one place, collect all the words that he has used at different places, list them in an alphabetical order and show which word has been used in which part of, say, Abhijnana Shakuntala, Raghuvamsha. The same word could have been used by Kalidasa in Raghuvamsha and Vikramarvashiya also. So we can say, this word has been used here in this sense and this in that sense. Concordances do not give the meanings. It's not a dictionary. It is just a list of words and gives you the place where it has been used. Okay. So Bloomfield prepared a Vedic concordance, which means for the Rig Veda usages and Yajurveda usages, he tells you which word is found in which mantra of which Sanhita, which particular mantra of that mandala and all that. He gives the details of that. Is that useful for you? अगर किसी वैदिक शब्द का प्रयोग हम देखना चाहते हैं किधर है तो आसान है. कंकॉर्डेंस में देखो तो बता देते हैं कि इस शब्द का प्रयोग इस मंत्र में हुआ है. अच्छा है ना, इंडेक्स है, अच्छा किया है. ब्लूमफील्ड ऐसा एक अच्छा काम किया है. बहुत से अच्छे काम किए हैं लियोनार्ड ब्लूमफील्ड. स्कॉलर है वेदास का, मगर जब भी हम बोलते हैं इन लोगों को स्कॉलर, याद रखिए हमारे जो वैदिक पंडित होते हैं, वेद विज्ञानी होते हैं, वेद भाष्यकार होते हैं, वेद भाष्य का पाठन करने वाले गुरु लोग होते हैं, उनसे भी अच्छे तो कभी नहीं होते. वे भी नहीं मानते कि मैं उनसे भी अच्छा गुरु हूँ. इधर आकर पढ़ते हैं, इधर आकर हमारे गुरुओं के पैर पर बैठकर सीख लेते हैं. लियोनार्ड ब्लूमफील्ड एक अच्छा आदमी था. वह वहाँ जाकर उल्टा सीधा बात करना ऐसा कभी नहीं किया. वहाँ जाने के बाद मैं तो उनसे भी अच्छा स्कॉलर हूँ ऐसा कभी नहीं किया. ओबीडियंटली, विनय से बोलता था, मैं तो थोड़ा कुछ सीख लिया हूँ और इससे काफ़ी हो गया. He said in that book Language, Leonard Bloomfield says, Panini is an intellectual monument. मेधा का एक बहुत बड़ा इमारत है. He is such a curio. To imagine about Panini itself actually gives me ecstasy. He expressed all his praise for Panini inside that book. And
It is he who used sandhi, the word sandhi, inside that book of linguistics. The word sandhi is a Sanskrit word from Sanskrit grammar, but he takes that word into linguistics. Very clearly acknowledges that he borrowed that word sandhi from Sanskrit and he is using in modern linguistics. And he uses words like internal sandhi and external sandhi and all that. Nowadays, people who are learning Sanskrit from Samskrita Bharati or all these organizations, they are mixed up people, hybrid people. So what they do is they half things they learn from Leonard Bloomfield, internal sandhi, external sandhi, and they come and do that to Panini, Ashtadhyayi, and they say, हाँ ये internal sandhi है, external sandhi है. Internal sandhi, external sandhi तो पाणिनि में नहीं होता है ना, संधि एक ही है. मगर इंटरनल संधि एक्सटर्नल संधि का क्लासिफिकेशन तो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड किया है, वहाँ से बारो कर लेते हैं और उसका उपयोग कर देते हैं. बट what you should see is that from this example that they had a great study of our grammar and grammar books and borrowed lot of concepts from Sanskrit and they started using it in what is called as linguistics. Okay, now let us understand what linguistics is and what way is it different from grammar. Let us imagine about their own countries, forget about India, Sanskrit or any such thing. Just imagine about Europe, all that they knew by the time this linguistics was started. The subject linguistics was started somewhere in the beginning of 20th century, around 1920, 1930. Before that in 19th century, they were doing philology, comparative study of languages. And for that philology also, for comparative study of languages also, they were borrowing concepts from traditional Sanskrit grammars. That's a different matter. But before any of these happened, philology happened or linguistics was started, they only had their grammars, French grammar or Italian grammar or German grammar, grammars of their modern European languages. That's all. There was no linguistics. Linguistics was a new subject. When they started linguistics in the 19th century, in early 20th century, late 19th century, that was a new revelation to them. They started imagining, yeah, what is this doing newly, differently from what the grammar books used to do. What was that doing? A grammar book is the grammar of only one language, French language. But linguistics is a science which talks about the general nature of any language in the world. Any language of the world. Language itself has a phenomenon. Phenomenon means what we are able to see. So, language itself, something like Indian society is one society, American society is another, European society, British society, French society. But when we use the word society, any society of the world is a society, right? You are a human being, he is a human being, these are all human beings. When we say just human being, that refers to human being in general, right? So English is a language, German is a language, French is a language, but when we say language, it refers to language in general. You are students of Nyaya, I should not struggle at all to tell you this. Language as jati. You understand? Language as jati. English language is a dravya. French language is another dravya. German language is another dravya. From among all these dravyas, you are drawing one jati, that is language. They are all, the common feature among all these is language, right? So, linguistics क्या कर रहा है? ये language जो जाती है, language बोल के सब में जो है, इसके बारे में एनालिसिस करती है. लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, लैंग्वेजेस किधर से आते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज इन जनरल. दैट इज व्हाट लिंग्विस्टिक्स डज. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रामर एंड linguistics? Okay.
So it is something like anthropology, which studies human being in general. Anthropology does not study French society only, or some tribal society of South America only, or an African society only. It studies human being in general. Sociology studies society in general. What is society? How can we understand the concept of society, the phenomena of society? Similarly, linguistics studies language in general. And when you make principles for language in general, you can take those principles and apply it to specific languages, different languages. So if you want to make such general principles of language, first of all, you have to arrive at those principles by studying different languages, various languages. For example, if I say sentences, there is something called sentence in any language. First of all, I should check with all the languages whether all the languages have sentences. If there is any language which has no sentence at all, then my category called sentence is not useful, because that is not there in all the languages. But they found that sentences are there in all the languages. That is why they started studying sentence. What is sentence? If I give a definition of a sentence, it should not only be applicable to English, it should be applicable to any language of the world. Then only it becomes linguistics. Okay. In some languages, there are no words. So what they did is, they started, the linguistics has a concept called morpheme. This morpheme is useful because you can, even when there are no words, you can have a morpheme, a part of a word. Okay, a small part of a word, a minimum unit of meaning, minimum meaningful unit. That is how morpheme is defined in linguistics. So what linguistics does is, it evolves general principles, common principles of all languages that can be applied across various languages of the world, and how to understand language itself as a phenomena, it does. It studies. That's how linguistics came into existence. And that's a good thing. Yeah, okay. And you can arrive at general principles only by comparing various languages. That's also a good thing to do. So they might say, you people in Sanskrit did not do such a comparative study of various languages. We did it. Yes, it's right. They did it, and Sanskrit scholars did not do comparison of various languages across the world. That's true. But for doing that comparative study of various languages of the world, various concepts of how to analyze were borrowed from Sanskrit only, from Sanskrit books only. For example, phonology, phonetics, how to analyze sandhi, how to analyze phonological changes, morphophonemic changes, all these things they learnt only after studying Sanskrit grammar. Okay, so what happened is, the subject linguistics started, and they went on analyzing languages in various ways. They went on analyzing sentences and relationship between words in various ways. And at one stage, there came a person called Noam Chomsky. This created a big revolution. You heard the name Noam Chomsky? When they taught you NLP, they should have introduced the name of Noam Chomsky to you. I expect people to introduce the name of Noam Chomsky when they talk about NLP. It was ridiculous that they did not introduce the name of Noam Chomsky to you at that time. Who was teaching NLP to you? Huh? राकेश दास. ओके. NLP में तो नोम चॉम्स्की का नाम पहला दिन आना चाहिए.
हाँ, सुने हैं, सुने हैं, भूल गए। अच्छा, तो देखिए, आप लोग भूल जाने से गुरु को अच्छा नाम नहीं मिलता है। लोग समझते हैं कि गुरु इनको पढ़ाए नहीं है ना। हाँ, ये क्या है, ये कौन है? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की is a professor of linguistics at MIT, Massachusetts Institute of Technology in United States. He is also known as a political commentator in United States. He is very famous or notorious, we can say both, in American politics also, but he is not a politician as such. He comments about the American government and he always opposes the American government. There are intellectuals who are called as anti-establishment, which means they are usually critics of the government side. He is also like that. So that's another personality, another side of his personality. His mother tongue, do you know that there are Jews? Jews, Jews को जानते हैं? हाँ, यूद लोग बोलते हैं हिंदी में, उनको यूद बोलते हैं. Israel, they are all, most of them are living in Israel now. यूद लोग. In English, we use the word Jews. हिटलर को जानते हैं? हिटलर लोगों को, लाखों लोगों को एक ही कमरे में भेजकर मार दिया, ये जानते हैं? हाँ, जानते हैं? इनको, जूस को, यूद लोगों को एक ही कमरे में भेजकर केमिकल गैसेस, पॉइजनस गैसेस भेजकर उनको मार दिया था. इसलिए उसका इतना बुरा नाम आ गया. हिटलर का इतना बुरा नाम क्यों? इसलिए कि वह ऐसा एक नरसंहार किया है. आजकल कोई नेशनलिस्ट है दुनिया में, भारत जय बोलता है या उसका फादरलैंड या मदरलैंड के बारे में नारे लगाते हैं, तो उन लोगों को फैसिस्ट कर रहे हैं ना. फैसिस्ट कहते हैं ना. कोई राष्ट्रवादी है तो उसको फैसिस्ट कहते हैं ना. इसका वजह कौन पता है आपको? हिटलर. हिटलर को बताकर, हिटलर राष्ट्रवादी था, जर्मन राष्ट्रवादी था और ऐसा नरसंहार किया है, इसलिए तब से बोलने लगे कि कोई भी राष्ट्रवादी होता है तो वह फैसिस्ट हो जाएगा, फैसिस्ट ही होगा. ये ऐसा है, हाथी के 4 पांव हैं, इसलिए 4 पांव जिसी को है वह हाथी है. समझ गए? इसको क्या बोलते हैं लॉजिक में, तर्क में? सिलोजिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म. रॉन्ग है, रॉन्ग लॉजिक है. एलिफेंट को 4 लेग है तो 4 लेग किसी को भी है, वह एलिफेंट ही है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना. अतिव्याप्ति दोष है इसमें, है ना. इसमें अतिव्याप्ति दोष है. एक हिटलर नेशनलिस्ट था, वो खराब काम किया है, उससे सब नेशनलिस्ट, सब राष्ट्रवादी हिटलर ही हो सकते हैं, यह तर्क निकाला गया था तब से. यह हिटलर जिन यूद लोगों को मारा, these Jews originally their homeland, original place from where they were born was Israel, and from there they migrated all over the world and got settled in different parts of Europe, and some of them got settled in Kerala also, in India. And in 1948 Israel was formed again. Without Jews it was there, Israel was there, but United States invited all the Jews of the world to come back and form that land, and they went back and formed Israel again. Original language in which Jews were speaking was Hebrew.
What is the language? Hebrew. And when they went to their own places, they forgot that language. They were not speaking Hebrew. They were speaking the languages of their areas, German, or if they got settled in England, English. If they got settled in France, French, they forgot Hebrew. When they came back to Israel, they all formed Israel again. Then they were thinking, see, we are speaking various languages. Some of us are speaking Russian, some of us are speaking German, some of us are speaking English and French and all that. So what should be the language of our country now, this new country? Recently, 48 is not very ancient period. Just in 1948, they formed their country, and when they formed that country, they thought, what should be the language? Then many decided that let us revive our old language, Hebrew. And how to revive that? Do you know? No, I don't know. I know only French. Do you know? I know only English. Do you know? I know only German. How can we revive? Only very few scholars were there who were remembering Hebrew to study Hebrew Bible. There is a Hebrew version of Bible, right? So they were studying that, and a few books of Hebrew they were studying. So they remembered it. What they did is, using those one or two scholars, that started teaching Hebrew to all the people. First, these three scholars each teaches to 10 people. Each of those 30 people teach to another 10 each. And it went on spreading. Now Israelis are speaking Hebrew. Do you get inspired from this? संस्कृत का भी ऐसा रिवाइवल हो सकता है ना? हम नहीं किए. हो सकता था. 1947 में हो सकता था, मगर हम नहीं किए हैं. वे लोग किए हैं इजराइल में. हिब्रू का रिवाइवल किए हैं. अब हिब्रू बोला जाता है उधर. हिब्रू के स्कॉलर्स भी निकले. अब हिब्रू के यूनिवर्सिटी है. मेरे कुछ दोस्त हिब्रू यूनिवर्सिटी बोलकर एक यूनिवर्सिटी है, उधर काम करते हैं. उधर फैकल्टी है हिब्रू यूनिवर्सिटी में. बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स. मैं एक नाम बता रहा था, डेविड शुलमन. संस्कृत के बारे में एक अच्छा बात भी बोला. ये उधर ही है, हिब्रू यूनिवर्सिटी में रहता है. मेरा और एक भी दोस्त है, इगाल ब्रोनर बोलकर, संस्कृत स्कॉलर, वहीं है, हिब्रू यूनिवर्सिटी में है. हिब्रू इतना उभर कर आ गया. अब हिब्रू में वेबसाइट्स है. हम गए तो हिब्रू वेबसाइट मिलता है, हिब्रू लैंग्वेज में होता है. हमको समझ में भी नहीं आता है ना हिब्रू. ऐसा इतना उसका डेवलपमेंट हो गया. अभी 48 से लेकर 2019 से पहले इतना हिब्रू का डेवलपमेंट कर दिए. ऐसा एक हिब्रू स्कॉलर इनका फादर था, नोम चॉम्स्की का. Noam Chomsky was the son of a Hebrew scholar, and as such he also was a Hebrew scholar. He learned Hebrew, and he also learned mathematics. He is a great scholar in mathematics also. He was a great psychologist also. Using all these backgrounds of him, he combined all these and started a new theory in linguistics, new ideas in linguistics. And those days, what he proposed in 1957 was, that book was called Syntactic Structures. And from that book, what became popular was a grammar model called TG grammar. What model? TG grammar. What is TG? T is transformational, G is generative. Transformational generative grammar.
I'll show you what he does in this grammar, then you will be able to understand those two words, transformational and generative grammar. He says, for example, he gives you a rule. He called them rules. R-U-L-E, rule. He gives you a rule from which he says a sentence is made up of two components, subject and predicate. Don't be baffled by these two words, subject and predicate. आप लोग तो जानते ही हैं उद्देश्य और विधेय. देखिए, उद्देश्य और विधेय जो दो शब्द है, संस्कृत शब्द है, और संस्कृत में ये शब्द कैसे निकलते हैं? उद्देश्य और विधेय समझने के लिए हम मीमांसा तक जाना पड़ता है. विधेय, विधि और विधेय, उद्देश्य, ये सब मीमांसा से आते हैं. मीमांसा से आकर सेंटेंस एनालिसिस में, वाक्य विभाग में उद्देश्य और विधेय ऐसे विभाग जो आए थे, इनको वे लोग ले लिए और बना दिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आज नहीं मानते, हाँ नहीं आप लोग नहीं बताए, हमको खुद आ गया, आकाश से निकल कर बोलते हैं, किधर से भी नहीं, हमसे लिए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलकर. इसको नहीं पता, चाम्स्की शायद नहीं जानता है कि कहाँ से उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला, मगर वे यूज़ करते हैं ये सब. हम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम इतना कंट्रीब्यूट किए हैं उन लोगों को. वे मानते नहीं, इसको छोड़ दीजिए, मगर सच है कि ये सब हमसे गया है. ये बोलता है, एक रूल बोलता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. रूल में क्या रहता है? एस इज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ऐसा रहता है. रूल को इस तरह देता है, मगर फिगर बनाए, ड्राइंग बनाए तो, डायग्राम बनाए तो ऐसा दिखता है. वहाँ से इसको फिर स्प्लिट किए तो सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन. नाउन का क्या होता है? एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव और नाउन मिलकर ये सब्जेक्ट होता है, ऐसा बोलता है. इधर क्या बोलता है? सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट किधर से आता है? इसमें दो होते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन होते हैं. एक रूल है, इस रूल को डायग्राम में बनाए तो ऐसा होता है. इसको भी इसी तरह हम बोल सकते हैं. इसमें भी वेर्ब होता है, वेर्ब का भी एक क्वालिफायर होता है, एडवर्ब. इसको इधर रखते हैं और इधर रूल बनाए. अगर रूल है तो वो रूल में क्या होता है? प्रेडिकेट, एरो मार्क, एडवर्ब प्लस वर्ब बोल के रहता है. ऐसे रूल्स देते जाता है. उन रूल्स को इधर डायग्राम में बताए तो ऐसा होता है. फाइनली इट विल कम एज स्लॉट्स, सम स्लॉट हियर, सम स्लॉट हियर. In this there will be a noun. Anyway it has to be noun only, and it will be a verb here. There is a verb. Okay, so finally with all the rules, one rule gives you one slot and then another slot, another slot. It goes on expanding. The diagram gives you finally some slots. Everything ends up in these spaces, in these slots. Then what happens is, if say for example this is a computer. Computer means a stupid machine, right? Machine itself is stupid, we make it intelligent. Okay, machine में कुछ नहीं रहता है ना. उसमें हम ये rules computer को दिए तो क्या होता है? Finally it comes up to some slots and it seeks those slots. That is, what to be put in that slot has to be supplied to that. From where can we supply? There has to be a database where, for example, to fill the verbs, we have to have a database of all the verbs. Then from that database, it picks up the verb and puts it here. And if we have to fill nouns here, we have to have a database of all the nouns, and it picks them up and it puts them there, right? Okay, it just puts the noun there or verb there, but
Finally, what should be the predicate, what should be the verb form, what should be the complete noun form, it does not tell you. Just noun is there. For example, if I say noun and number, for example, noun plus number, I have to get the word Ramaha, from that I have to get Ramaha. So, how to get Ramaha plus Bahuvachanam? Right? What am I saying? Ramaha plus Bahuvachanam. Ramaha plus Bahuvachanam, I have to get Ramaha. For this, there has to be another rule. The rule has to tell me jas. Okay, it has to include jas. Jas स्थानी है. स्थानी में क्या आना है? आह आना है, उधर आस आना है. स्थानी में आस एक प्रत्यय आना है, इसके लिए भी सूत्र होना चाहिए, है ना. ऐसे सूत्र को भी देता है, दूसरे सूत्र देता है. यह सूत्र जो है जिससे ऐसा ट्री आता है, इसको जेनरेटिव रूल्स बोलते हैं. ये इसलिए कि जेनरेशन पैदा करना, जेनरेशन का मतलब है पैदा करना, उत्पत्ति करना. ये क्या कर रहा है? इधर से लेकर जनरेट करते जा रहा है, उत्पत्ति करते जा रहा है, पैदा करते जा रहा है. इधर तक आता है, इधर स्लॉट्स तक पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है. फाइनली उस स्लॉट्स में जो जो फिल होता है उनको चेंज करना, भी ट्रांसफॉर्म करना है. ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग से रूल्स होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स बोलते हैं, है ना. राम प्रातिपदिका है, प्लस उसको क्या करना, एक स्थानी जस देना है. जस में स्थानी में फिर से आकर एक और आस आकर बैठना है. इसके लिए रूल्स जो दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स. राम इति प्रातिपदिकाम रामाहा इति कर्तुम शक्यते, है ना. इसलिए हमको एक रूल चाहिए. उस रूल को क्या बोलते हैं? Transformational rule. He gives transformational rules for that. Okay, and he gave those transformational rules, and people started getting surprised. Till then, their English grammar books did not have such an analysis. They only had just this sentence is correct, this sentence is wrong. You have to use tenses this way, you cannot use tenses this way, because it was techne grammaticae. It started for writing technique, how to write. That was only Kavishiksha Grantha. They started from there. So, their grammar books never gave such rules. Rules were not there. That too, generative rules and transformational rules. This method itself was not there. They all got surprised and started saying, wow, this is so mathematical. This is computer-like. This is useful for computer. There are rules here. And people started teaching this, and from America it got imported. And you know, in India, if anything is imported, costly. Imported है तो अच्छा है. Imported है ना. ये हेयर पिन रहता है. हेयर पिन क्या है? हम भी तब बना सकते हैं ना. फिर भी लड़की को बोले तो हेयर पिन इंपोर्टेड है तो अच्छा है, हेयर पिन है ना. सब चीज इंपोर्टेड होना चाहिए हमको. इधर इंपोर्टेड आ गया अमेरिका से, और लिंग्विस्टिक्स इंपोर्टेड हो गया था तब तक. यूनिवर्सिटीज में लिंग्विस्टिक्स को पढ़ाते थे. लिंग्विस्टिक्स लियोनार्ड ब्लूमफील्ड है, ये सब तो आ गया था. इसमें एक खूबी है, मैं बोल रहा था ना, एक खूबी है. एक खूबी ये है कि कंपैरेटिव स्टडी होता है. सब लैंग्वेजेस का कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है, उनमें से जनरल रूल्स निकाल रहे हैं. अच्छा ही है ना, वो तो इंटरेस्टिंग था. वहाँ ये जब ये नोम चॉम्स्की का टीजी ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर आया, तो इतना फैशन हो गया, इतना फैशन हो गया यूनिवर्सिटीज में कि सब लोग ये ट्रीज बनाने लगे. इसको क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम. ऐसे डायग्राम्स को ट्री डायग्राम बोलते हैं, इसलिए कि यह शाखा जैसा दिखता है, ब्रांच. सो ए उल्टा ट्री, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम. ये ट्री डायग्राम ऊर्ध्वमूलम
अधशाखम है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम ना, ये ऊर्ध्वमूलम अधशाखम ट्री है। ये ट्री तो ऐसा नहीं चलता, ऐसा चलता है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम यही है शायद, है ना, ये नहीं है। ओके, तो ये generative tree, we call it generating tree, generative tree. It came from rules, generative rules, and this became such a fashion those days. I was a child when this came into existence, and I was able to see many lecturers of me, teachers of me drawing these things, tree diagrams, enjoying, देखो yes ये subject predicate निकलता है, इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है, फिर भी फैशन था, इसलिए कि अंडरवेयर इंपोर्टेड है, वो बहुत सुख देता है, इंपोर्टेड होने के वजह से सुख देता है। ये सब करते थे ये लोग, लेक्चरर्स, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स ट्री डायग्राम्स लिखने लगे। तो जब इसका क्या कर रहा है इसके बारे में समझ में आ गया, तो एक दो लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर संस्कृत बैकग्राउंड के भी रहते हैं ना, वे देखने लगे इसमें क्या है जी, अष्टाध्यायी में तो यह पहले से है, अष्टाध्यायी में जो रूल्स होते हैं, सूत्र है ना, ये सूत्र रूल ही है, इस सूत्र से जनरेशन ही हो रहा है, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जनरेटिव रूल्स भी है, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स भी है। यह भी यहाँ तक कि यहाँ वर्ब आकर बैठना है, यहाँ नाउन आकर बैठना है, इसलिए हमको धातु पाठ है, धातु पाठ में धातुओं का लिस्ट है, और वो लिस्ट भी अष्टाध्यायी का अनुबंध ग्रंथ है। इतना तक चॉम्स्की बोल रहा था कि ये टीजी ग्रामर का अनुबंध में एक लेक्सिकॉन होना चाहिए, वो बोलता था लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ नाउन्स एंड लिस्ट ऑफ वर्ब्स रहना चाहिए। यह भी मैच हो गया, इतना तक कि ये संस्कृत प्रोफेसर्स, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में जो थे, वे सोचने लगे कि चॉम्स्की कॉपी कर दिया। कहाँ से? संस्कृत से। संस्कृत पढ़ लिया है, अष्टाध्यायी जानता है, इसीलिए अष्टाध्यायी का जो धातु पाठ वगैरह है इसको लेक्सिकॉन बना दिया। इसमें जो जो रूल्स है उनको जनरेटिव रूल्स और ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स बोल के बता दिया। ये तो सच नहीं है, ये उनका ही खुद का आइडिया है, नोम चॉम्स्की का, इसलिए उनको कॉपी कर दिया, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। मगर उसको ऐसा फ्लैश आ गया जो अष्टाध्यायी से सिमिलैरिटी रखता था, अष्टाध्यायी जैसा आइडिया उसको आ गया, टीजी ग्रामर। तो दुनिया भर जब लोगों को मालूम हो गया कि एक अष्टाध्यायी है भारत में, संस्कृत का व्याकरण वह टीजी ग्रामर जैसे ही है, तो और एक सेंसेशनल न्यूज़ बन गया। अरे वाह, ये अष्टाध्यायी के बारे में जानते थे, वह अच्छा ग्रामर है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड पहले से बोलता था कि पाणिनि, अरे बाप रे पाणिनि बहुत। एक लिंग्विस्टिक्स बुक में एक प्रोफेसर लिंग्विस्टिक्स का ऑथर लिखता है, पाणिनि हैज एंटीडेटेड लिंग्विस्ट बाय मिलेनिया। इसका मतलब है पाणिनि आज के जो लिंग्विस्ट है उनसे हजारों साल आगे गया है। एंटीडेटिंग मीन्स आगे जाना, मिलेनिया का मतलब सहस्राब्द। एंटीडेटेड लिंग्विस्ट बाय मिलेनिया का मतलब है हजारों सदी, हजारों वर्ष आगे गया है हमारे लिंग्विस्ट से। कॉन्टेम्प्ररी लिंग्विस्ट, मॉडर्न लिंग्विस्ट जो है, वे पाणिनि से हजारों वर्ष पीछे हैं, ऐसे लिखा गया था पहले ही, चॉम्स्की से पहले ही। अब ये मालूम हो गया टी ग्रामर, जी ग्रामर, टीजी ग्रामर और लेक्सिकॉन ये सब अष्टाध्यायी में है, तो अभी आश्चर्य हो गया, अरे ये पाणिनि तो बहुत कमाल का आदमी है। People started feeling extraordinarily great about him, and then they started talking about the similarities between TG grammar and Panini's Ashtadhyayi, and there was a lot of discussion at that time. And some people started saying it's not fair, you don't compare Panini to TG grammar, because
Panini is after all writing only grammar of a specific language called Sanskrit, whereas linguistics comes as a universal theory. It is applied and it is applicable to all the languages of the world, language in general. नेट जी, JRF जी, इधर देखिए, क्या नाम है इनका? हाँ, शिवंगदार जी. आपको मैं JRF बुलाऊं? नहीं नहीं ना. हाँ हाँ हाँ. सुबह सुबह उठना मुश्किल तो है, मगर सुनना भी है ना. थोड़ा क्लास रखे हैं तो थोड़ा सुनना भी पड़ता है ना. मुझे भी नींद आता है, क्या करूं, पढ़ाना पड़ता है. Okay, so now they said that Chomsky or any such linguist is greater than Panini because it is universal. It is a general theory, universal theory, and it is theory. Panini is not giving any theory. Panini is only giving some rules, some grammar book. So Chomsky is giving you philosophy, theory, whereas Panini is giving you only a product. You understand the difference? प्रोडक्ट दे रहा है तुमको, वह प्रोडक्ट भी एक लैंग्वेज को अप्लाई होता है, एक ही लैंग्वेज को अप्लाई होता है, बस इतना ही. इसके पीछे जो थियरी है, ये थियरी तो पाणिनि नहीं दे रहा है. पाणिनि के पीछे कोई थियरी नहीं ही है, उसको यूनिवर्सल थियरी नहीं है. इसलिए Chomsky is great. Chomsky is greater than Panini because he is giving you a theory, a philosophy, a universal theory that is not there for Ashtadhyayi. People started saying this. Later there were many surprises to them in comparison between Panini's Ashtadhyayi and Chomskyan method. One of the followers of Chomsky, following that same method, one professor called Charles J. Fillmore, wrote a book called Case for Case that deals with case grammar. Let me tell you the word case. Case is nothing but karaka. You know karaka? That is called case in English. That comes from Latin. Actually, they had in Latin grammars, they had this word case. So those of you who want to go into English books and linguistics analysis to work on Panini's Ashtadhyayi and all that, you must know this word case. What is called karaka, what karaka is called in English, you must know. It is case, they use the word case. And coincidentally, it is the same 7 number, and the cases are also similar. When we say that our ideas went there, migrated there, they say no, they deny, but how can there be such a coincidence? Exactly, Pradhama Vibhakti, nominative case, and for Panchami Vibhakti, there is ablative case, there is genitive for Shashti Vibhakti. There are very great similarities between Latin method and Sanskrit method. Probably there were days when they were interacting and these ideas went from India only to Latin. So they had similar cases, and that came to English grammars also from Latin, and they started saying this is nominative case, this is that case, and all that in traditional English grammars. And this Charles J. Fillmore started saying that case is a very important aspect, karaka is a very important aspect that should be introduced into this kind of TG grammar analysis. And he went on analyzing how case is important, how all the world languages have aspects of case and all that. केस फॉर केस का मतलब है, केस फॉर का मतलब है मैं उसके पक्ष में वाद कर रहा हूं. केस फॉर केस का मतलब है मैं कारक के पक्ष में वाद कर रहा हूं. इसका मतलब है कारक को आप लोग इसमें शामिल नहीं किए हैं, शामिल करना है, इस पक्ष में मैं वाद कर रहा हूं. इस अर्थ से केस फॉर केस बोला है. केस फॉर केस में पहला शब्द केस जो है वह पक्ष में वाद करना, इस अर्थ में उसका उपयोग किया गया है.
सेकंड शब्द जो केस है कारक इस अर्थ में किया है। केस फॉर केस यमकालंकार है ना, यमकालंकार समझते हो? यमकालंकार में एक ही शब्द का दो प्रयोग होते हैं, एक अर्थ में और दूसरा अर्थ में। इधर भी वैसे ही हो रहा है, केस फॉर केस में सुनाई देने में तो अरे एक ही शब्द है मगर दो भिन्न अर्थ है। ऐसा एक टाइटल केस फॉर केस, उसका ऑथर कौन है? चार्ल्स जे फिल्मोर, चार्लेस जे फिल्मोर। ये 68 में आया है, 1968 में। इसको लेकर भी सेंसेशनल न्यूज आ गया वर्ल्ड वाइड, अरे बहुत अच्छा नया बुक आ गया है। तब तो संस्कृत प्रोफेसर्स रहते ना इंडियन यूनिवर्सिटीज में, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में, ये बोलने लगे ये कुछ भी नहीं है, हमारा कारक ही है। उनको निराशा हो जाती है, हम कुछ भी बोलते हैं ये लोग, अरे अपने में है कारक ही है बोल देते हैं। और उनको आश्चर्य होने लगा कि इतने सिमिलैरिटीज कैसे हो सकते हैं अष्टाध्यायी और चॉम्स्की के मेथड के बीच। एक नया आइडिया आता है केस के बारे में तो कारक भी है बोल देते हैं जो कुछ भी बोलते हैं वह पाणिनि में है। तो लोग सोचने लगे कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। और एक प्रोफेसर है J.F. स्टॉल बोलकर, स्टॉल, ये और एक प्रोफेसर कृपास्की इनका नाम है, लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर उधर अमेरिका में, इंडोलॉजिस्ट भी थे। ये स्टॉल इसलिए फेमस है कि वह यज्ञ केरल में जो अतिराग यज्ञ चल रहा था उसका फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया है। अग्नि बोलकर एक बुक है, लाइब्रेरीज में मिलता है, देखे हैं अग्नि बुक, उसमें फोटोग्राफ्स है ना, यज्ञ के बहुत से फोटोग्राफ्स। यही है प्रोफेसर स्टॉल, J.F. स्टॉल। याद आ रहा है अभी, आथर का भी याद आ रहा है? हाँ, J.F. स्टॉल का बुक है ये। हाँ, लाइब्रेरी में ग्रंथालय अस्ति। हाँ, J.F. स्टॉल has published that. He's a great Indologist. He published many things about many different things, and he was also a linguist. And he and Kripaski started saying that all these similarities cannot be just coincidences. There is some reason, probably the universal grammatical ideas that Chomsky, people say that Chomsky has, they are there in Panini also. There has to be some universal grammar in Panini also. These people started saying, Kripaski and Stall, they started saying that there must be some universal principles behind Panini's Ashtadhyayi. And when I was in my MA, my teacher told me that this is just an illusion that Panini's Ashtadhyayi has any theoretical background. If it is there also, no one has documented it. Nowhere universal grammatical principles, that is सिद्धांत, सब भाषाओं को अप्लाई होने वाला एक भाषा सिद्धांत पाणिनि के पीछे नहीं तो है, या तो नहीं है, या उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया है, ऐसा मेरा प्रोफेसर बता रहा था। तभी मैं छोटा था, आप जैसे, मैं आर्ग्यूमेंट करने का बहुत शौक था मुझे, किसी से भी मैं नहीं बोलता था। हाँ, प्रोफेसर को भी बोल दिया, नहीं सर होगा, कहीं होगा ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर है तो बताओ बोल रहे थे। मैं बोलता था कि मैं बताऊंगा, किसी न किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, कहीं होगा सर, मैं बताऊंगा सर बोल दिया। तो प्रोफेसर हंस पड़ा, बोला कि अच्छा अच्छा बताओ, मैं जिंदगी भर इंतजार करते रहूंगा, तुम बताओगे कि नहीं बोल दिया। अच्छा बोलिए, हंस पड़िए, हम तो बताएंगे बोल दिया को मैं। और मैं दूसरे बुक्स भी पढ़ते गया, सब जगह यही है, इसके पीछे थियोरेटिकल
बैकग्राउंड नहीं है। अमेरिका में और एक पाणिनि का बहुत बड़ा स्कॉलर है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जॉर्ज कार्डोना। उनका नाम जानते हो? जॉर्ज कार्डोना। भारत में इनका बहुत सम्मान होता है। जब भी ये भारत आते हैं तो लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक अभिनव पाणिनि है, इतना सम्मान देते हैं। ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, फिलाडेल्फिया बोल के एक सिटी है, उसमें पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बोल के एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक प्रोफेसर है। सच ही एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। उनसे मैं मिल चुका हूँ, जब भारत आए थे तब मैं इनसे मिल चुका हूँ, संभाषण भी चला था। आदमी भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड प्रोफेसर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ये सब ठीक है। मगर इनका एक बुक है पाणिनि ए सर्वे ऑफ रिसर्च बोलकर एक बुक है, पाणिनि ए सर्वे ऑफ रिसर्च। पाणिनि ए सर्वे ऑफ रिसर्च। इस बुक में, पाणिनि ए सर्वे ऑफ रिसर्च में, मैं ढूंढ लेते गया। जो मेरा प्रोफेसर बोला यूनिवर्सल थियरीज नहीं है, कोई ना कोई बोला ही होगा, कहीं ना कहीं बोला ही होगा। मैं ढूंढ लूँ बोलकर मैं ढूंढते गया। एक सब चैप्टर सेक्शन मिला, वहाँ कंपैरिजन्स बिटवीन अष्टाध्यायी और चाम्स्की ये टॉपिक आता है। वहाँ बोलते हैं ये जॉर्ज कार्डोना, एक गलत है, ये सब कंपैरिजन्स अच्छे नहीं हैं, ये लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं, ये सब हेस्टी है। कुछ मिल गया, इधर एक रूल बुक है, उधर भी एक रूल बुक है, इधर सूत्र है, उधर रूल्स है, कंपेयर कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा लिख देते हैं। और आगे जाकर ये भी बोलते हैं कि इसके पीछे थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, विश्वजनीन सिद्धांत तो नहीं है। विश्वजनीन सिद्धांत चाम्स्की के पीछे है, अष्टाध्यायी के पीछे नहीं है। जिसके पीछे विश्वजनीन सिद्धांत नहीं है, उसको लेकर एक भाषा के लिए जो ग्रामर बनाया गया है, उसको लेकर विश्वजनीन सिद्धांत से जो बनाया गया है उससे कंपेयर करना अच्छा नहीं है बोलकर कार्डोना भी लिख दिए हैं। जब भी मैं ऐसे वाक्य पढ़ता हूँ गुस्सा आता था मुझे, नहीं कहीं है सोचता था मैं, कहाँ है मुझे भी पता नहीं था। बाद में एक दिन मुझे वाक्यपदीयम मिल गया। वाक्यपदीयम में वाक्य कांड के अंत में कुछ श्लोक आते हैं, वहाँ एक स्टोरी दिया जाता है जिसमें वे खुद कहते हैं कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसके पीछे जो सैद्धांतिक नेपथ्य है, सैद्धांतिक भूमिका है, इसको व्याडी संग्रह में रखे हैं। वह संग्रह लुप्त हो गया था, संग्रहे अस्तम उपांगते, he says that संग्रह got astam, it got sunset, it got disappeared. जी नमस्कार, कैसे हैं? सुप्रभातम। देखिए तो संग्रह में जो कुछ भी फाउंडेशंस, यूनिवर्सल लिंग्विस्टिक्स के फाउंडेशंस हैं, ये सब महाभाष्य में पतंजलि प्रिजर्व किए हैं। और बोलते हैं पतंजलि के कुछ शिष्य थे, नाम भी बताते हैं, भर्तृहरि, भैजी सौभव हर्यक्ष, he gives the name, शुष्क तर्कानुसारिभिः, भैजी सौभव हर्यक्षैः शुष्क तर्कानुसारिभिः, he says, and the bhashya also got lost, he says, and then people forgot the theoretical foundations itself because they were not able to follow Patanjali's Mahabhashya correctly,
And he gives a beautiful reason for why people did not follow Patanjali's Mahabhashya well. He says because it is an easy book. Today we say that Patanjali's Mahabhashya is very, very difficult, it's a huge book, we are not able to follow. But Bhartrhari says, Uttana iva sausthavat, he says. Uttana means shallow. पानी ज़्यादा गहरा नहीं है तो संस्कृत में उसको उत्तान बोलते हैं. उत्तान इव सौष्ठवात, because it's a very well structured book, it is very well written, people started thinking that it is just a shallow book, it's not a very deep book. Because of that, people lost touch with that book and they did not start understanding the theoretical foundations that were described in Patanjali. Then he says, Dakshinaatyeshu granthamatre vyavasthitah. In southern area, this was preserved, and mere gurus, Vasuratadibhyah, they went there, Parvatad agamam labdhva, he says. They went to Parvata and they acquired the agama, that is the actual original tradition which was preserved by Vyadi and then preserved by Patanjali, that was preserved in Dakshina. Parvata, he says, and in Swapagnya Vyakhya, what is this Parvata? It is explained. Trilinga Parvata Ikadesha Sri Parvata iti. Then he says a specific hill, mountain, where Vyakarana, Adhyayana, Adhyapana was going on. My guru went there, Vasurata went there and got those theoretical foundations. And all those theoretical foundations now I am preserving in Vakyapadiyam. So that was Vedaham, Eureka for me. I said, see, I got it. Now, theoretical foundations. And this was just 6 months later to my teacher's words in MA. Just 6 months later. And I went to my teacher and said, see, theoretical foundations, universal. I said that I can find it and now I found it. And my teacher started saying, you have to prove it, that it is the theoretical foundations. You have to provide proof. If the book just says that it is the theoretical foundations, that is not sufficient. There have to be reasons for why you are accepting that. Then I went on drafting my MPhil dissertation, proving that there is a relation between Panini's Ashtadhyayi and Vakyapadiyam provides only theoretical foundation. That is the only purpose of Vakyapadiyam. That was my argument. My argument was that Vakyapadiyam has no other purpose than providing universal theoretical foundations, just like universal principles in language, in linguistics. There are universal principles in Vakyapadiyam. Those universal principles are applied in Ashtadhyayi to Sanskrit, but universal principles are there in Vakyapadiyam. This was my argument. And I went on showing proofs also. One of the biggest disparities between Ashtadhyayi and Vakyapadiyam is that Ashtadhyayi generates का मतलब है सिद्धि करता है पदों का, generates only words. At the end of anything, finally you arrive at only one word. भर्तृहरि बोलता है वाक्यार्थ ही प्रधान है, वाक्यार्थ ही सत्य है, बाकी सब असत्य है. पदेन वर्णा विद्यन्ते. Right? There is nothing like even vakyeshu pada na vidyante, vakyeshvapi pada na vidyante. So words are not there, parts of words are not there. Vakya is also not there for that matter. Only Vakyartha is there. Vakyartha is the actual reality. So Bhartrhari is Vakyartha centric. This Ashtadhyayi is generating only words. How can you connect these two? These are quite opposite to each other. Then what I did is I said the Sutra Samartha Padavidhi. है ना समर्थ पदविधि जानते हो? समर्थ पदविधि ही यह इसको ही स्थापित कर रहा है, साबित कर रहा है कि समर्थ पदविधि में क्या है. लोग जानते थे कि समर्थ पदविधि वृत्ति के बारे में बात करता है.
मेरे बचपन में तो लघु कौमुदी पढ़ाने वाले बोलते थे समर्थ पद विधि समास के बारे में ही बात करता है, सिर्फ समास के बारे में। समर्थ पद विधि में जो सामर्थ्य है वह समास को परिमित है बोलते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो समास को परिमित नहीं है, वृत्ति के बारे में बता रहा है। वृत्ति में जो सामर्थ्य है वह महाभाष्य के मुताबिक दो रूप में होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य, व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य। पद्मनाभन जी इधर थे ना, समर्थान ही पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसमें ये सब आता है। और आपके व्याकरण गुरु भी इधर पढ़ाए होंगे, व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। मैं एक उसमें से वाद निकाला, आर्ग्यूमेंट किया कि एकार्थी भाव क्या है। अगर एकार्थ है सब पदों का, सब पदार्थों का एकार्थी भाव होता है, तो यह एकार्थ वाक्यार्थ ही है, वाक्यार्थ ही एकार्थ है। वाक्यार्थ अगर एकार्थ है तो पद विधि ही क्या है, पदानाम विधि ही क्या है, सामर्थ्य एकार्थ। यह वाक्यार्थ भर्तृहरि का जो वाक्यार्थ है इसी को बता रहा है। इसलिए वाक्यपदीयम में जो वाक्यार्थ प्राधान्य है वह समर्थ पद विधि में आया है, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट निकाला और गुरु को बताया, अपने गुरु को। और इसके बारे में मैं गया, व्याकरण गुरु जो थे, पेरी सूर्य नारायण शास्त्री आदि बहुत बड़े बड़े गुरु थे, उनके पास जाकर बताया उनको, तो सब बोलने लगे समीचीनम समीचीनम, बहुत अच्छा है, परफेक्ट परफेक्ट आर्ग्यूमेंट, वी ऑल अग्री with you. And because my teacher was not such a great scholar in Sanskrit grammar, I had to show all such proofs that व्याकरण gurus are agreeing. उनसे बताना है ना, व्याकरण गुरु बोल रहा है ये सब, तो तब मानने लगे कि हाँ ठीक है। And then I went on showing other proofs also. निर्धारण पंचमी, अपादान पंचमी का एक प्रकार होता है, ऐसा साधन समुद्देश्य में बताया जाता है। निर्धारण में पंचमी होता है या षष्ठी होता है? उत्तम तरह, उन्नत तरह, ये बोलने के लिए मैं क्या करना है, एक वाक्य बनाइए। राम कृष्णौ, रामात कृष्ण उन्नत तरह। रामात का प्रयोग पंचमी विभक्ति हुआ है या नहीं? निर्धारण पंचमी बोलते हैं कि नहीं इसको? उन्नत तरह इधर हाँ, वह एक्सेप्शन है। जनरली निर्धारण में पंचमी ही होता है, पंचमी का प्रयोग ही होता है। मगर हम तो ध्रुवम अपाये अपादानम पंचमी, तो अपाये लेते हैं ना, अपायम रहना है। तो इसमें साधन समुद्देश्य में भर्तृहरि बोलता है निर्धारण भी एक तरह का अपाय है। कैसे? बौद्धिकार्थे, बौद्धिकार्थे हम क्या कर रहे हैं, राम और कृष्ण को एक के बगले में एक को बिठाते हैं और उन्नत तरह बोलने के लिए उनको अलग कर देते हैं। समुदायात एकदेशम पृथक क्रियते। There is a group, Rama and Krishna are being put together in Bauddhartha, in Sampratyayartha. He uses these words, Bauddhartha and Sampratyayartha. These are the words used by who? Bhartrihari in Vakyapadiyam for mental meaning. Okay, Bauddhartha and Sampratyayartha. Would you like to note or not?
यह वस्तु जो है ये संप्रत्यार्थ नहीं है, यह पदार्थ ही है, डायरेक्टली पदार्थ है। संप्रत्यार्थ यह है, जब मैं पेन बोलता हूं तो जो अर्थ इधर मुझे आता है उसको संप्रत्यार्थ या बौद्धार्थ, बौद्धिक अर्थ बोलते हैं। उसमें बौद्धार्थ में बुद्धि में एक अलग करना हो रहा है निर्धारण में। इस अलग करने में एक वस्तु ध्रुवम है, अपायम दूसरे वस्तु को, राम ध्रुवम है मेंटली और अपाय कृष्ण का हो रहा है। ऐसा एक्सप्लेनेशन साधन समुद्देश्य में दिया गया है। ऐसे बहुत से जगह है जहां पाणिनि के अष्टाध्याय में जिसको हम समझ नहीं सकते हैं उसको समझाता है भर्तृहरि वाक्यपदियम के द्वारा पदकांड में, समुद्देश्यों में। ये सब मैं बताते गया तो प्रूफ्स मिलते गए कि अष्टाध्यायी का थियरी देने के लिए ही वाक्यपदियम बनाया गया है, ऐसा प्रूफ दिया गया। मैं सब प्रूफ्स देते गया और एस्टैब्लिश कर दिया, प्रूव कर दिया मेरे एमफिल डिसर्टेशन में कि थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ अष्टाध्यायी हैव बीन प्रिजर्व्ड। अब तो न्यूज है ना, ये न्यूज है कि नहीं? तब दुनिया भर में ये चल रहा था ना, टीजी ग्रामर, टीजी ग्रामर। ओ टीजी ग्रामर तो एक ग्रामर है, ये टीजी ग्रामर का सिमिलैरिटीज विथ अष्टाध्यायी है, मगर एक डिफरेंस था। उसके पीछे थियोरेटिकल फाउंडेशंस है, इसके पीछे थियोरेटिकल फाउंडेशंस नहीं है। अब थियोरेटिकल फाउंडेशंस मिल गए। जब थियोरेटिकल फाउंडेशंस मिल जाते हैं तो वह क्वेश्चन भी आंसर हो गया। मैं आपको बताऊं, अभी ये सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 57 में जब थे ये चॉम्स्की, उसके बाद लैंग्वेज एंड माइंड बोल के और भी एक बुक लिखे। उस बुक में मैं कल जो बता रहा था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके बारे में वहां बताते हैं नोम चॉम्स्की। क्या है LAD, याद है? मैं यूंग के बारे में बताते वक्त मैं LAD के बारे में बता रहा था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी में, नेचुरलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी में बॉर्न नॉलेज जो होता है, जन्म सिद्ध ज्ञान जो होता है, उसके बारे में नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हम में। हम जब जन्म लेते हैं तो हम में एक फैसिलिटी है, न्यूरोलॉजिकली फैसिलिटी है जो हमको लैंग्वेज सीखने में काम आता है। इसको क्या बोले हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। you have all written also, just go back to those pages। यूंग के बारे में जो पेज है, नोट्स है, वहां जाओ तो दिखेगा। आप लिख भी लिए हैं, मगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं हम लोगों को, उसमें और एक अधिकार भी दिया गया है भूलने का अधिकार। पता है आपको? संविधान में एक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। क्या है? भूलने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई भूल गया तो उसको कुछ नहीं बोलना, भूलने का अधिकार तो है सब लोगों के। देख लो, पीछे जाओ, है ना LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका प्रतिपादन नोम चॉम्स्की इस बुक में करते हैं, लैंग्वेज एंड माइंड एक बुक में, और बोलते हैं कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बाय बर्थ, हमको ये आ रहा है। जब मैं वाक्यपदियम पढ़ रहा था, आपको ये मैं बता भी दिया हूं और एक भाषण में, आद्यः करण विन्यासः प्राणस्योर्ध्वं समीरणम, ये सब था। स्थानानाम अभिघातश्च नवीना शब्द भावना, that is there. So what is Bhartrhari also, like Noam Chomsky, he is also saying that by birth we have a language acquisition device। यह तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। अरे ये भर्तृहरि का थियरी, जो पाणिनि का थियरी, पीछे का थियरी है, इसमें नोम चॉम्स्की का थियरी में भी इतना साम्य है।
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी इधर बताया गया है, तो मैं उसको भी बता दिया कि इसमें भी रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है, नेचुरलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है, वहां भी रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है, नेचुरलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है ना। ये अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के बारे में हम जो सुनते हैं ना, ये सब शब्दबोध में एम्पिरिसिस्ट है। उसका मतलब पोस्ट नेटली ये सब होता है बोल के बताते हैं, मगर व्याकरण का मीमांसकों से यही भिन्नत्व होता है कि यह बॉर्न नॉलेज है, यही आद्य करण विन्यास है। ये सब हम बताकर स्थापित कर सके कि चॉम्स्की के पीछे जो थियरी है उसमें भी पाणिनि के पीछे जो थियरी है उसमें सिमिलैरिटी है, इसका स्थापन कर दिए तो हमारे गुरु भी खुश हो गए। वे मान लिए कि अरे इतने सिमिलैरिटीज तो नहीं हो सकते हैं। और एक आर्ग्यूमेंट भी पाणिनि का है, चॉम्स्की का है, वह बोलता है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब है पर्याप्तता। He uses a word adequacy. एडिक्वेट एक एडजेक्टिव है, ये एडिक्वेट एडजेक्टिव से एडिक्वेसी नाउन फॉर्म आता है। अगर कुछ एडिक्वेट है उसमें एडिक्वेसी होता है। तुम्हारे पास काफी पैसे हैं, इसलिए इसको बोलने के लिए हम डू यू हैव एडिक्वेट मनी, ओके, एंड देन आई कैन से आई हैव एडिक्वेसी ऑफ मनी, ओके। डू यू हैव एडिक्वेट एनर्जी इन यू, आई कैन से डू यू हैव एडिक्वेसी ऑफ एनर्जी इन यू, ओके। चॉम्स्की क्या बोलता है, एक ग्रामर बुक में डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी रहना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी का मतलब है जितने प्रयोग भाषा में होते हैं, लक्ष्य जितने होते हैं, सबका लक्षण दिया जाना है एक ग्रामर बुक में। सभी लक्ष्यों का लक्षण जब मिलता है तब एडिक्वेसी है। समग्र होना चाहिए, व्याकरण समग्र होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ग्रामर में पर्याप्तता होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी किसी ग्रामर में है तो इसका मतलब है उसके पीछे ऑब्जर्वेशनल एडिक्वेसी है, मतलब प्रयोग परिशीलन में पर्याप्तता है। अगर सूत्र में समग्रता है, सिद्धि करने में पर्याप्तता है, तो उसका मतलब है प्रयोग परिशीलन में, लक्ष्य परिशीलन में भी पर्याप्तता है। और ये दोनों तभी हो सकते हैं, तभी संभव हो सकते हैं जब एक्सप्लेनेटरी एडिक्वेसी थियरी में है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब विवरण, सिद्धांत जो है, ये थियरी, यूनिवर्सल थियरी जो है, ये थियरी में, सिद्धांत में विवरणात्मक पर्याप्तता होता है। प्रयोग परिशीलन पर्याप्तता, सूत्र में पर्याप्तता और सिद्धांत में पर्याप्तता, इन तीनों एक साथ रहते हैं, ऐसा बोलता है। तो हम बोल दिए कि अष्टाध्यायी एक व्याकरण के रूप में पर्याप्त है, यह तो सिद्ध हो चुका है। सब लोग बोल चुके हैं कि पाणिनि सभी संस्कृत प्रयोगों का कवर करता है। यह तो डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी है। समझ गए आप लोग? डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी का मतलब पर्याप्त डिस्क्रिप्शन किया है। जितना डिस्क्रिप्शन करना है, जितना लक्षण करना है, उतना लक्षण कर दिया है अष्टाध्यायी। डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी है। उसके पीछे ऑब्जर्वेशनल एडिक्वेसी तो होना चाहिए, इसलिए उसका सिद्धांत में भी एडिक्वेसी होना चाहिए। वह एडिक्वेट सिद्धांत, पर्याप्त सिद्धांत वाक्यपदीय में मिल रहा है, ऐसा मेरा वादन था उसमें, थीसिस में। ये सब जितने जितने मैं आर्गुमेंट्स देते गया, सब कुछ
जो टीजी ग्रामर और चॉम्स्की के पाणिनि के बीच जो कंपैरिजन चल रहा था, अब देखिए ग्रामर है, ग्रामर ऊपर का स्ट्रक्चर है, टीजी ग्रामर ऊपर का स्ट्रक्चर है, सिद्धांत तो उसका फाउंडेशन है, बुनियाद है, अंदर रहता है, अंदरूनी चीज है। सिद्धांत यहां रहता है ना। थियरी यह व्याकरण है। ये लोग जो टीजी ग्रामर और पाणिनि के बीच में कंपैरिजन बता रहे थे, वे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन बता रहे थे। ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ऊपरी तल निर्माण जो है, उसका कंपैरिजन कर रहे थे। अब मेरा कंपैरिजन कहां हो गया? बुनियाद। बुनियाद में भी कंपैरिजन है, बुनियाद में भी सिमिलैरिटीज है पाणिनि के अष्टाध्यायी और नॉन चॉम्स्की के थियरी में। या इस सिद्धांत को मैं लाया। इसको अभी हम प्रूव करने के लिए और एक थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करना पड़ता है। मैं अगर इस सिद्धांत वाक्यपदी में जो है अष्टाध्यायी के पीछे का सिद्धांत जो है, इसको मैं इंग्लिश को भी अप्लाई कर दिया तो वह यूनिवर्सल बताया जा सकता है। अगर वह यूनिवर्सल है तो सभी लैंग्वेजेस को अप्लाई होना है ना। इंग्लिश में कृदंत है क्या? कारक तो है। कारक बोध करने के लिए इंग्लिश में क्या होता है? आपको प्रीपोजिशन मालूम है इंग्लिश में? बताइए, एक दो प्रीपोजिशन बताइए। इन करेक्ट, एंड नहीं, एट करेक्ट, ऑन, बाय, विथ, वंडरफुल, एक्सेलेंट। सो आप जानते हैं प्रीपोजिशन क्या है? यह प्रीपोजिशन कारक बोध कर रहा है। क्या कर रहा है? कारक बोध कर रहा है। प्रीपोजिशन से जो बोध हो रहा है वह कारक का ही बोध हो रहा है। ओके। और संस्कृत में क्या होता है? कारक बोध करने के लिए विभक्ति का उपयोग हो रहा है ना। यह विभक्ति प्रत्यय के रूप में प्रकृति या प्रातिपदिका के बाद आ रहा है संस्कृत में, मगर इंग्लिश में क्या हो रहा है? प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन का शब्द का प्रयोग क्या है? प्रीपोजिशन, शब्द से पहले आता है, इसलिए प्रीपोजिशन है। तो ये एक और भी बात है, प्रीपोजिशन शब्द से अलग होता है, वर्ड से अलग होता है। वह सफिक्स के रूप में, प्रत्यय के रूप में लग नहीं जा रहा है अंदर, यहां तो लग जा रहा है। जिस भाषा में ऐसा प्रत्यय के रूप में लग जाकर परिवर्तन शब्द में होता है, उन लैंग्वेजेस को इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। इन्फ्लेक्शनल, इस प्रत्यय से जो परिवर्तन हो रहा है उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। लैंग्वेजेस को इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। संस्कृत को इसलिए इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज बोलते हैं। अंग्रेजी को एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। एग्लूटिनेटिव इसलिए कि ये सब अलग अलग हो गए हैं। agglutinative, agglutinative, जिसमें प्रत्यय से नहीं होता है ऐसा बोध, उसको अलग अलग शब्दों से होता है, उसको अग्लूटिनेटिव कहते हैं। बंगाली, हिंदी, इसमें भी थोड़ा अग्लूटिनेटिव लक्षण है। का, के, की अलग से आते हैं ना, शब्द में प्रत्यय नहीं बनते हैं ना, थोड़ा अग्लूटिनेटिव फीचर है ये। संस्कृत में तो प्रत्यय से चेंज हो रहा है, इसलिए इन्फ्लेक्शनल बोलते हैं, इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज है। इतना ही फर्क है, मगर
केस तो है, वहां भी केस है, यहाँ भी केस है। केस का बोध हो रहा है, कारक का बोध हो रहा है। कारक का बोध करने के लिए अलग से शब्द आते हैं अंग्रेजी में, इधर अलग से शब्द नहीं होते हैं, इतना ही है। कृदंत तद्धित संस्कृत में अंग्रेजी में है क्या? बताइए, सोचिए। एक कृदंत, अंग्रेजी का एक कृदंत बताइए। कृदंत का मतलब वर्ब से आना है और वर्ब नहीं होना है। कुक, कुकिंग, कुक, कुकर इज नॉट देयर। कुकर फॉर द दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड कुकर, यस। वर्क, वर्कर। और भी बताता हूं, TION किधर आता है, वे सब कृदंत ही है। स्टेशन है ना, स्टेशन, जहां स्टे करते हैं वह स्टेशन है। संस्कृत जैसा है, वहां भी स्था जैसा स्टे है। वह देखिए, स्टे और स्था में शब्द साम्य भी है ना। यस और टा में शब्द साम्य भी है। स्टे से स्टेशन आ रहा है, स्थान इधर आ रहा है, वही स्थान कृदंत है। ये स्टेशन भी कृदंत हो सकता है। तद्धित होते हैं क्या संस्कृत में? अंग्रेजी में तद्धित होते हैं क्या? नेस से जो बनते हैं, हैप्पीनेस वगैरह, वह सब तद्धित ही हैं। शिप से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। हुड से जो बनता है, मैनहुड, चाइल्डहुड, ये सब तो तद्धित ही हैं। हम बोल सकते हैं हुड तद्धित प्रत्यय है। कोई भी अंग्रेजी का ऐसा ग्रामर नहीं लिखा है ना, हम लिखेंगे। हम अंग्रेजी का ऐसा एक ग्रामर लिखेंगे जहां संस्कृत व्याकरण के शब्द प्रयोग हो सकता है। यह तद्धित है, यह कृदंत है, यह कारक है, यह कारक बोधक है। हम विभक्ति नहीं बोलते उसको, संस्कृत में तो विभक्ति प्रत्यय होता है, इसलिए एक और शब्द बनाना है, कारक बोधक। प्रीपोजिशन कारक बोधक है, ऐसा बनाकर एक अंग्रेजी का संस्कृत पद्धति का व्याकरण तो बना सकते हैं ना, है ना। अंग्रेजी का व्याकरण संस्कृत को लगा गया है, हम उल्टा करेंगे। संस्कृत व्याकरण के पद्धति को अंग्रेजी को लगाएंगे, तब प्रूव हो जाएगा कि यह यूनिवर्सल है। संस्कृत का जो पद्धति है उसको चाइनीज को भी लगा सकते हैं, जापानीज को भी लगा सकते हैं। और इसको करने के लिए भर्तृहरि के वाक्यपदीय में सभी फैसिलिटीज है। मैं इसका आर्ग्यूमेंट किया हूं। इसलिए भर्तृहरि के वाक्यपदीय में जो थियरी है, लिंग्विस्टिक थियरी है, वह यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, विश्वजनीन है। सभी भाषाओं को वह लगाया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा भी मैं उसमें आर्गुमेंट किया हूँ। और एग्जाम्पल अभी मैं नहीं किया हूँ, अंग्रेजी का ग्रामर नहीं लिख चुका हूँ। आप लोग लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, सब लोग मिलकर लिखेंगे और तुम्हारा भी नाम रखेंगे ऊपर कि अंग्रेजी का ग्रामर, संस्कृत पद्धति में अंग्रेजी का ग्रामर, उसका हम मुद्रण करेंगे, है ना। तो प्रूव करेंगे। संस्कृत पद्धति में चाइनीज का ग्रामर, संस्कृत पद्धति में रशियन का ग्रामर, सब लिखेंगे। बहुत से हैं, लैटिन भी, लैटिन वगैरह जो इंडो यूरोपियन फैमिली में लैंग्वेजेस है, संस्कृत से सिमिलैरिटी है उनको, वो सब इन्फ्लेक्शनल ही है। इसीलिए वहाँ भी शब्दों का जो टेबल्स हम सीखते हैं ना संस्कृत में, रामः रामो रामः, ऐसा उधर भी टेबल्स हैं। लैटिन में भी टेबल्स होते हैं। लैटिन में भी डिक्लेंशन टेबल्स बोलते हैं उनको। शब्द के जो टेबल्स हैं उनको डिक्लेंशन टेबल्स बोलते हैं। धातु के जो टेबल्स होते हैं उनके कॉन्जुगेशन टेबल्स होते हैं। वैसा उनको भी टेबल्स है, इसलिए कि वह भी इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज है, टेबल्स बनते हैं उधर। मजा आया? तो शांति मंत्र करेंगे।
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारिणे